नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिन आज आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा लिंक लेयर का मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और डेटा लिंक लेयर के अंदर ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल और रेजोल्यूशन का क्या यूटिलाइज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इन डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू नोड्स, इट्स मेन फंक्शन। डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या काम होता है, लेयर 2 से लेयर 3 के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये दो नोड्स के बीच में एक मेन फंक्शंस का काम करता है। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो? फर्स्ट होता है डेटा लिंक कंट्रोल, अनदर वन होता है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। ये है डेटा लिंक कंट्रोल, ये है मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन। देन व्हाट इज द डेटा लिंक कंट्रोल? द डेटा लिंक कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर ट्रांसमिशन चैनल बाय यूजिंग द टेक्निक लाइक फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल and flow control. For data link control refers to stop and wait ARQ, address resolution queue। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा लिंक कंट्रोल के अंदर काम करते हैं तो डेटा लिंक कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी डेटा के ट्रांसमिशन मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन एक फ्रेमिंग के रूप में एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल्स के साथ में उसको ट्रांसफ़र करने का काम होता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल की। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? ये एक डेडिकेटेड लिंक होता है दो सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो कंट्रोल लेयर का काम करता है। और दूसरी चीज़, ये किसी भी चैनल के अंदर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की रिक्वायर्ड होती है, जो कोलिजन और अवॉइड क्रॉसनेस को अवॉइड करने का काम करता है। हम देखते हैं, इफ there is a dedicated link between the sender and the receiver, then data link control layer is sufficient. However, if there is no dedicated link present, then multiple stations can access the channel simultaneously. Hence, the multiple access protocol are required to decrease collision and avoid crosstalk. For example, in a classroom full of the student, when a teacher asks a question and all the student or station start answering simultaneously, send data at the same time, then a lot of choice is created, data overlapped or data lost. Then it is the job of the teacher multiple access protocol to manage the student and make them answer one at a time. नेक्स्ट होता है those protocols are required for sharing data on non-dedicated channel. Multiple access protocol can be subdivided further as कौन कौन सा होता है? मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकंड होता है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, थर्ड होता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट में होता है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर एक होता है एलोआ, एक होता है CSMA, एक होता है CSMA CD और एक होता है CSMA CA। दूसरा होता है रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग। दीज ऑल आर कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स। कैरेक्टराइजेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है? FDMA, TDMA एंड CDMA। दीज ऑल आर कैरेक्टराइजेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में। इन दिस ऑल स्टेशंस हैव सेम superiority, that is no station has more priority than another stations. Any station can send data depending on the medium state, ideal or busy. It has two features. There is no fixed time for sending data. There is no fixed sequence of station sending data. The random access protocol are further
subdivided edge. First one is ALOA. It was designed for the wireless local area network but is also applicable for shared medium. In this, multiple stations can transmit data at the same time, can hence lead to collision and data being the garbled. एक होता है प्योर अलावा. प्योर अलावा क्या काम करता है? When a station sends data, it wait for the acknowledgement. If acknowledgement doesn't come within the allotted time, then the station waits for a random amount of time called back of time (TB) and resend the data. Since the different station wait for the different amount of data of time, the responsibility of further collision decrease. Vulnerable time 2 into frame transmission time throughout G expression minus 2 into G maximum throughput equal to 0.1844 G 0.5. Another one, slotted ALOA. Slotted ALOA. It is similar to pure ALOA, except that we divide time into slot and sending of the data is allotted only at the beginning of these slots. If a station misses out that allowed time, it must wait for the next slot. This reduces the probability of collision. Vulnerable time equal to frame transmission. Time throughput equal to G expectation in star G maximum through output equal to 0.368 for G equal to 1. For more information on ALOA, refers LAN technologies. CSMA. CSMA, carrier sense multiple access, ensure fewer collision as the station is required to first sense the medium for ideal or BG before transmitting data. If it is ideal, then it sends data, otherwise it wants till the channel become ideal. However, there is the still channel of collision in CSMA due to propagation delay. For example, if station A wants to send data, it will first change the medium. If it finds the channel ideal, it will start sending data. However, by the time the first bit of the data is transmitted, delayed due to propagation delay from the station A. If station B required to send the data change the medium, it will also find it ideal and will also send data. This will result in collision of data from the station A and B. Another one, CSMA access modes. 1. Purgents. The node changes the channel. If ideal, it sends the data, otherwise it continuously keeps on checking the medium for being ideal and transmit unconditionally with one probability as soon as the channel gets ideal. Non-persistent. The node sends the channel. If ideal, it sends the data, otherwise it checks the medium after a random amount of time, not continuously, and transmit when the found ideal. P presents. The node sends the medium. If ideal, it sends the data with P probability. If the data is not transmitted 1 P probability, then it waits for some time and checks the medium again. Now, if it is found ideal, then it sends with P probability. This repeat continues until the frame is sent. It is used in Wi-Fi and packet radio systems. This is the advantage of CDMA: increase in efficiency, high data rate, goods for the multimedia traffics. Disadvantage: complex to implement and high peak to power ratios. Spatial division multiple access SDMA
HDMA use the multiple antennas at the transmit and receiver to separate the signal of multiple users that are located in the different spatial direction. This technique is commonly used in MIMO, multiple input multiple output wireless communication systems. In advantage, frequency band usage effectively, the overall signal quality will be improved and the overall data rate will be increased. Disadvantage, it is complex to implement. It requires the accurate information about the channel. Channel allocation in computer network. When there are more than one user who desire to access a shared network channel, an algorithm is deployed for the channel allocation among the computing users. The network channel may be a signal capable or optical fiber connecting multiple nodes or a portion of a wireless spectrum. Channel allocation algorithm allocate the wide channel and bandwidth to the user who may be base station, access point or terminal equipments. Channel allocation schemes. In the channel allocation schemes, channel allocation may be done using two schemes: static channel allocation and dynamic channel allocations. In static channel allocations, in static channel allocation scheme, a fixed portion of the frequency channel is allotted to each user. For n computing user, the bandwidth is divided into n channel using the frequency division multiplexing FDM, and each portion is assigned to one user. This scheme is also referred as fixed channel allocation or fixed channel assignments. In this allocation scheme, there is no interface between the user since each user is assigned a fixed channel. However, it is not suitable in case of a large number of users with variable bandwidth requirements. Another one, dynamic channel allocations. In dynamic channel allocation scheme, frequency bands are not permanently assigned to the user. Inserted channel are allotted to user dynamically as needed for a central pool. The allocation is done considering a number of parameters so that the transmission interference is minimized. This allocation scheme optimizes bandwidth usage and result is faster transmissions. Dynamic channel allocation is further divided into centralized and distributed allocations. तो दोस्तों ये था आपका डायनेमिक चैनल एलोकेशन और CDMA FDMA। अब मैं आप लोगों के लिए थर्ड यूनिट लेके आऊँगा। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।